Hello everyone. Today we will discuss a very important and an interesting lecture about the history of England. In simple words, the making of England. How England emerged as a nation and as a country on the map of the world. We will begin this historical background with Anglo-Saxon and Britons. Let's discuss and learn in detail the making of England. The beginning of Britain. The British Isles located off the west coast of Europe. Here we are talking about the location of the British Isles, where they are located, the west coast of Europe. So there are so many islands in the British Isles. First appear in the recorded history through the writing of the Roman general Julius Caesar. So what we know about the British Isles, we know through the writing of the Roman general Julius Caesar, because he was the first who arrived there. So Julius Caesar वो पहला शख्स था जो ब्रिटिश आइल्स पहुंचा था. इसलिए हमें जो रिटन रिकॉर्ड है और राइटिंग है, सो हमें जूलियस सीजर के राइटिंग के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पर जो है ना ब्रिटिश आइल्स एग्जिस्ट करते थे. या हमें ब्रिटिश आइल्स के हिस्ट्री के बारे में अगर पता चलता है फर्स्ट राइट, सो दैट इज थ्रू द राइटिंग ऑफ जूलियस सीजर. सो व्हाट हैपेंड इन 55 BC? In 55 BC, the Caesar, right? Caesar, anybody who ruled upon, who was the emperor of the Roman, was known as Caesar. So in 55 BC, okay, 55 BC means that 55 years before the birth of Jesus Christ. So 55 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले सीजर ने शिकस्त दी. किसको? गाल्स को, राइट, जो कि मॉडर्न फ्रांस से. सो ही डिफीटेड Caesar defeated Gauls in 55 BC, and then he sailed toward the largest island in the British Isles to assert Roman authority over it. उसके बाद वो कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया largest British Isles, जो कि ब्रिटेन था. So वहाँ पर मैंने कहा ना कि there were so many islands, and out of those islands the British Isles was the largest one, and the British Isles consist of like Netherlands, Scotland and Britain itself. So वो सीजर वहाँ पर पहुँच गया, right? क्यों पहुँच गया? He wanted to impose, right, or to assert his authority over the Britain. So first in the history हम जानते हैं कि ब्रिटेन को कंट्रोल किया था, या उसको ऑक्यूपाई किया था, या उस पर अथॉरिटी कायम की थी किसने? रोमन एम्पायर ने. ओके, द सीजर ऑफ रोम. फाइन. नाउ Britons, Picts and Gales. So these were the people who were living on the British Isles. So here the Caesar, he encountered these people. So there he encountered, we're talking about the Caesar, the Britons, a Celtic people. Some people pronounce it Celtic while some people pronounce it Celtic. So he encountered Britons. Britons कौन थे? ये Celtic people थे from whom Britain gets its name. Other group living on the island including the Picts. और लोग जो वहाँ पर रह रहे थे इस ब्रिटेन आइल्स पर, वो थे Picts, who were a remnant of the pre-Celtic civilization. राइट, वो कहाँ से आए थे? प्री केल्टिक सिविलाइजेशन से आए थे. एंड द गेल्स, अनदर केल्टिक स्पीकिंग ग्रुप लिविंग इन आयरलैंड, द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रिटिश आइल्स. राइट, सो ब्रिटिश आइल्स में आयरलैंड भी आता है. राइट, सो ही इनकाउंटर्ड दीज थ्री टाइप्स ऑफ पीपल, राइट, ब्रिटन्स, पेक्ट्स एंड गेल्स. राइट, एंड दे वर लिविंग ऑन द ब्रिटिश आइल्स. ब्रिटिश आइल्स में फिर आपको मैंने कहा कि ब्रिटेन भी आता है, नीदरलैंड भी आता है और आयरलैंड भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है. ये सारे वहां पर थे. नाउ द ब्रिटन्स हैड अ रिच कल्चर. Okay, we are talking about the Britain. We are not talking about the Ireland. The Britain had a rich culture
and they were skilled in agriculture, right, and metalwork and trade. Now, with neighboring Celt people, जो नेबर में लोग रह रहे थे केल्ट, वो उनसे एग्रीकल्चर भी करते थे और जो है ना मेटल वर्क भी करते थे, राइट. सो they also had an oral tradition, not written tradition, oral tradition of literature and learning maintained by their priests, right? Advanced society, and they were not strong enough to resist the Roman. So ये इतने स्ट्रांग नहीं थे कि ये मुकाबला करते रोमन्स के या सीजर का वो मुकाबला कर सकते थे. Now, about a century after Caesar's visit, the Roman returned with full military force, right? Now, despite resistance, they defeated the Britons and took control of the island. जब सीजर ने वहाँ पर विजिट किया, उसका गरज क्या था कि वो उसको ब्रिटेन को कंट्रोल कर सके. लेकिन एक सदी बाद वो फुल फोर्स के साथ आए और उन्होंने ब्रिटिश को कंट्रोल किया. बिकॉज दैट टाइम द ब्रिटन्स दे डिड नॉट हैव दैट मच पावर टू रेजिस्ट अगेंस्ट द रोमन एम्परर. नाउ आफ्टर कंकरिंग ब्रिटन्स, Britain became a province of the Roman Empire. So the Britain became एक सूबा बन गया किसका? रोमन एम्पायर का. Now the Romans brought major advancement including cities, stone, road, and written scholarship and Christianity. So it was Roman, right, people who brought Christianity to the British Isles, right, and who brought like writing, scholarship, and who brought like advancement in the Britain, because Britain became one of the province of the Roman Empire. Now, over time, the Britons adopted to Roman cultures and became dependent on the Roman military for protection. वक्त के साथ साथ जो है ना उन्होंने ब्रिटिश रोमन के कल्चर को भी अडॉप्ट किया, क्योंकि ये खुद कमज़ोर थे तो अपने प्रोटेक्शन के लिए इन्हिसार करते थे किस पर? रोमन सोल्जर्स पर या रोमन एम्पायर पर, राइट. सो दिस इज ओके द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन, राइट. द ब्रिटेन, वन ऑफ द लार्जेस्ट island were on the British Isles, the Britain Isles. And then this British Isle for the first time was visited by Julius Caesar, who was a general, a Roman general, right? And through his writing, we know that there exists British Isles, west coast of Europe. And then a century later, the Roman, they captured, they invaded the Britain by force. And then they brought some advancement there. Christianity arrived there, some advancement in constructions, infrastructure. Later on, the Britain adopted the culture of the Roman Empire or the Roman people. And they were dependent on the Roman now for their protection because they were not strong enough themselves. Now, the decline of the Roman Empire. However, in the early 5th century, as the Roman Empire faced invasion elsewhere, the Roman army withdrew from the Britain to defend Roman itself. जब उन्होंने कन्फ्रंट किया और फ्रंटियर्स पर रोमन एम्पायर ने, या वो डिक्लाइन का शिकार हो गई, तो अपने एम्पायर को बचाने के लिए उन्होंने ब्रिटेन से अपने फोर्सेस को निकाला कि वो रोमन एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके जो एल्सवेयर और उसके बाउंड्रीज थे. सो विद द मिलिट्री गॉन, जब मिलिट्री ब्रिटेन से चली जाती है, सो ब्रिटेन वाज लेफ्ट वल्नरेबल एंड सून न्यू इन्वेडर्स बिगिन टारगेटिंग द आइलैंड्स. इट वाज अ सेफ प्लेस. ब्रिटेन को इस तरह छोड़ दिया, एम्प्टी, खाली छोड़ दिया, वहाँ पर कोई फोर्स नहीं थी, क्योंकि
रोमन सोल्जर्स ने डिफेंड करना था किसको? रोमन एम्पायर को। समवेयर एल्स इसको खाली छोड़ दिया गया, वल्नरेबल फॉर अदर इन्वेडर्स टू अटैक। सो इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर फिर 5th सेंचुरी में कौन आता है? एंग्लो सैक्सन्स आते हैं। Now the Anglo-Saxon period 449 till 1066, जब यहाँ से रोमन सोल्जर्स जाते हैं रोमन एम्पायर को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सो ये जगह खाली रह जाती है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं थी। सो इसको रिप्लेस किया किसने? एंग्लो सैक्सन ने, जो कि वेस्ट जर्मेनिक